मेरा नाम सावित्री ठाकुर। हम गुलबर्गे से आई। एक 9 साल से तकलीफ था, यहाँ ऑपरेशन कर लेने में अच्छा हुआ है। चल तो जरा। मेरा नाम संतोषी, ये मेरे मम्मी है। इनको 9 साल से प्रॉब्लम था आर्थराइटिस, उससे घुटनों का प्रॉब्लम हो गया। तो 3 महीने से तो कुछ भी चल नहीं सक रहे थे, बेड पे थे। तो फिर गुलबर्गे में हमारे पास कैंप आ गया, ये नारायण हॉस्पिटल से है बोलना मालूम हो गया, पता चला हमको। तो फिर कैंप में बताए बस इसको दोनों घुटनों का ऑपरेशन करना और लॉन्ग रॉड डालना पड़ता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है बोले। तो बोलने से हम फिर इधर आ गए बेंगलुरु को। आए बाद प्रशांत बी एन सर हमारे को देख के फिर ये ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है, ऐसा करना पड़ता बोल के ऑपरेशन करे सर। 24 तारीख को ऑपरेशन हो गया हमारा। आज स्टिचेस निकाले तो वाकर पकड़ के चल सक रहे थोड़ा थोड़ा मम्मी अच्छा सा। प्रशांत बी एन सर ऑपरेशन अच्छा करे, थैंक्स प्रशांत बी एन सर को। और बोले तो अब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है हमारे मम्मी में। So recently I came across with a patient by name Savitri Bai. She had osteoarthritis of the both the knee with that varus deformity of the leg. The more interesting part is she is walking around with that pain, and she is a rheumatoid arthritis patient also. That has caused secondary stress fracture in her proximal tibia. So since that limb was varus, and it was very important to address the varus deformity and our osteoarthritis problem and this stress fracture also. Since the stress fracture is that the limb alignment has to be straight, so achieving that straight alignment was made comfortable with our robotic surgeries, which would have been slightly tough with the conventional surgery. So for post surgery, since it was a robotic surgery, her pain factor was less. Within 10 days she is comfortably able to walk, and her pain factor is significantly down, and she is recovering well.